top of the hour, let's begin with the updates that we are picking up of the continuous storm that been witnessed on the floor of the House. This is the budget session, the first half of the session, where the storm in the Parliament continues over the Adani row. The opposition parties disrupted the proceedings again in the House for the 3 consecutive days that we have seen, while insisting on their demand that the government should either constitute a JPC or launch a Supreme Court monitored probe in the Adani shares rout. अब हमने देखा किस तरीके से बार-बार जो फ्लोर ऑफ द हाउस है उसे डिस्टर्ब करने में जुटी हुई है ऑपोजिशन की पार्टीज, और जहां हमने देखा कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा पूरे दिन के लिए एडजर्न कर दिए गए थे। आज सुबह 11 बजे फिर से जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स है वो रिज्यूम होगी, और ऑपोजिशन लीडर्स का ये भी कहना है कि हम वो जो प्रोटेस्ट है वो ना सिर्फ इनसाइड द हाउस लेकिन बाहर भी रेस करेंगे। हमने देखा है कि किस तरीके से वो नारेबाजी में जुटे हुए थे गवर्नमेंट के खिलाफ और एक्शन चाह रहे थे इस पूरे मुद्दे पर, जहां तक LIC और SBI के जो शेयर्स इन्वेस्टमेंट है, और बोल रहे थे कि लोगों का भारी नुकसान हुआ है, जहां तक उनकी जो जीवन भर की पूंजी है उन पर उन्हें काफी नुकसान सहना पड़ा, और सीधे तौर पे जवाब मांग रहे प्रधानमंत्री मोदी से कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे अपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे, क्योंकि हमने देखा है गवर्नमेंट किस तरीके से बार बार ये कह रही है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को पहले स्मूथली फंक्शन होने दीजिए। सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। Exactly, the Prime Minister is reminding the people of this country how even then, when there was a huge scam, the government did not investigate into it. So in the same way, they are trying to wash away this session without a discussion, without JPC, constituting a JPC, for the simple reason that the Prime Minister and the BJP government at the center doesn't have anything to say in its defense now. They are in the middle of a scam, they are in the middle of a controversy. They will have to answer this in the question, answer this in the session. हमारी डिमांड है BRS पार्टी की तरफ से एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर्म किया जाए, जिसमें हमारे पार्लियामेंट मेंबर सभी दल के होंगे। तो एक इम्पार्शियलिटी से इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जब देश को इतना प्रभावित करने वाला कुछ भी घटना घटती है तो प्रोब तो ज़रूर होना चाहिए। ये हमारा पहला डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि मॉरली और सोशली टुडे देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ही शुड स्पीक आउट, ही शुड एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ दिस नेशन। यही काम किया है सरकार को सवाल पूछने का। क्या सरकार से सवाल पूछना ये डेमोक्रेसी में गलत है या गुनाह है, अपराध है? प्रधानमंत्री जी बार बार छोटे छोटे विषय पर ट्वीट करते हैं, बात करते हैं, मन की बात करते हैं। मैं कहूँगा मन की बात छोड़ दीजिए। अगर अपोजिशन से आप बात नहीं करना चाहते, अपोजिशन एक मांग कर रही है कि JPC बिठाइए। क्या JPC की मांग पहली बार हुई है देश में? BJP ने भी मांगी थी बहुत बार, और JPC चाहे नरसिंह राव हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे राजीव गांधी हो, प्रधानमंत्री कांग्रेस के, सभी ने JPC किसी ना किसी विषय पर बिठाई है। तो कम से कम इस मुद्दे पर जो ऑपोजिशन यूनिटी है वो सामने नजर आ रही है। हमने देखा है कि बार बार ये मांग उठ रही है कि JPC उसका गठन किया जाए, और दूसरी तरफ से ये मांग उठ रही है कि CGI मॉनिटर्ड एक पैनल बिठा दिया जाए, कमेटी बिठा दिया जाए, ताकि वो देख सके कि लोगों को आखिरकार कितना नुकसान हुआ है निवेश के कारण अदानी एंटरप्राइजेस में। लेकिन स्टेपिंग अप द अटैक व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द कांग्रेस पार्टी has urged the Prime Minister to break his silence. Taking to Twitter, Congress leader Jairam Ramesh fired 3 main questions at the Modi government. Firstly, asking that the party should actually make it clear that how did LIC make such a heavy allocation to the Adani group knowing that it was risky. Secondly, it asked if the government or the LIC raised any concern on the Adani investments. And thirdly and finally, asking the government to share the true extent of LIC's losses from Adani investments after Jan 24, यानी कि जब जो Hindenburg report है वो सबके सामने आई. Meanwhile, there has been fissures that have been appearing even when it comes to the opposition ranks over the question of whether they should participate in
in the budget session or not. Congress's former president Sonia Gandhi is learned to have conveyed that the legislative business should be allowed while a demand for discussion on Adani Rao is raised. Sources say that even the TMC feels that it is important to place on record the statement of the opposition rather to boycott the sessions. तो हमने देखा है किस तरीके से जो लॉक जैम है वो पार्लियामेंट में कंटिन्यू रहा है. जब से शुरुआत हुई है बजट सेशन की, हमने एक भी दिन पूरी तरीके से पार्लियामेंट को फंक्शन करते हुए नहीं देखा है. लेकिन ऑपोजिशन में भी एक तरीके की दरार पड़ चुकी है. जैसे कांग्रेस पार्टी और टीएमसी वो चाहते हैं कि अपनी जो मांग है वो रिकॉर्ड पे लाया जाए, लेकिन जो जितना काम हो रहा है पार्लियामेंट का, जो बाकी बिजनेसेस है उसे अफेक्ट ना किया जाए. लेकिन जो दूसरी पार्टीज है जैसे कि आरजेडी हो जाए, आम आदमी पार्टी और बीआरएस हो, वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा स्कैंडल है और इस पे सरकार का अपना खुलासा करे और सीधे तौर पे बयान दे, डिस्कशन हो, डिबेट हो, और वो इसी मुद्दे पर अड़े रहना चाहते हैं. At the moment, there is no need because the regulatory authorities are looking at the grievances which have been raised regarding the entire Adani issue. So perhaps they should wait for that. In any case, if they have any immediate grievances, in the reply to the budget, in the reply to the presidential address as well, it's always open to the opposition parties. I mean, they can maneuver this. It's a financial issue. It's an economic issue. It's always possible for them to, weave this into any speech they make and raise it. So I don't know why specifically there must be, it is an important issue, but, specifically, as I said, it's premature. And specifically, there are ways of bringing it up and raising it. Well, India is now leaving its stamp on the world when it comes to India entering the yet another rarefield club of global powers that has the capacity to manufacture combat helicopters. The Prime Minister has proudly laid the foundation stone for a brand new gleaming facility owned by Hindustan Aeronauticals Limited. This new facility is the latest to open in Karnataka, where drones and Tejas aircrafts that are already being built in the state, and India is already self-reliant in manufacturing assault rifles, aircraft carriers and fighter jets as well. HAL is of course the same public utility company that was still recently dismissed by the opposition, in their own words, as one looked over by the Modi government in favor of his suit-booted friends as well. This charge in fact was made with a lot of shrillness against the Modi Sarkar back in 2018 when the opposition suggested that the Rafale deal was mired in corruption. In fact, when it comes to the claim that Chaukidar was a chore, at that point in time was the Congress party mobilizing a war cry to lead up to the 2019 Lok Sabha elections. Naturally, even if we look here at the present, it is the Modi Sarkar and the dedicated new HAL facility that has now been given to the nation that he couldn't resist the temptation to remind the opposition of their fake claims and what he called was a transparent attempt at maligning the nation's image. Listen in. No opposition party really doubted the ability of HAL. We all believed in HAL capacity. Indigenous defense-making services like BHAL, BL and HAL are more important and integrated part of our defense system, and nobody doubted. It was absolutely a wrong information which was spread by the Honorable Prime Minister of India. या किसी ने ब्रीफ नहीं किया. इननेट किसने बनाया था? किस कार्यकाल में बना था? कितने HAL ने बड़े बड़े हमारे आयुध सामग्री तैयार की थी. प्रधानमंत्री जी, शोभा नहीं देता आपको, पहले देख तो लिया कीजिए. नेट का मैंने उदाहरण दिया. Exactly, the Prime Minister is reminding the people of this country how even then, when there was a huge scam, the government did not investigate into it. So in the same way, they are trying to wash away this session without a discussion, without JPC constituting a JPC, for the simple reason that the Prime Minister and the BJP government at the center doesn't have anything to say in its defense now. They are in the middle of a scam, they are in the middle of a controversy. They will have to answer this in the question, answer this in the session.